आज हम करेंगे डिस्कस हीट. We have discussed work. Work is a form of energy. यानी वर्क एनर्जी का एक फॉर्म है विच इज एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ द गैस because of difference in the internal pressure of the gas and external pressure. And that means this contraction or expansion of the gas takes place because of the difference in the pressure, internal pressure of the gas and external pressure. So similarly, heat is also a form of energy. Heat is also a form of energy exchanges between system and surroundings as a result of difference in temperature between them. For example, if we have a system, this is a system, एक system है, we'll take a system like this. This is a system, it contains water, its temperature is 50 degrees Celsius. So these are surroundings, ये surroundings है. So heat is exchanged. So surroundings में जो temperature है, that is 30 degree. So there is a difference of temperature between system and surroundings. So heat, a form of energy will get exchanged. That form which here gets exchanged between system and surroundings due to difference of temperature. क्योंकि यहाँ पर temperature जो system that is 50 degree and your surroundings that is 30 degree. So यहाँ पर heat exchange हो जाएगा, यहाँ पर एक form of energy exchange हो जाएगा, that is known as heat. उसको हम बोलते हैं heat. So now in simple terms we can define heat. Heat is a form of energy exchange between system and surroundings as a result of difference in temperature between them. This heat is represented by symbol Q. इसको हम करते हैं Q से denote. Q से करते हैं इसको denote. Heat को both the work and as well as the heat, ये दोनों forms of energy, जो ये दोनों form of energy है, work as well as heat, they appear only at the boundary of the system. यानी appear हो जाती है ये दोनों form at the boundary of the system. Now sign of this Q, इसका sign, so इसके दो sign हो सकते हैं. If the sign of the Q is negative, अगर हम मानते हैं Q का sign negative है, what it means? इसका क्या मतलब है? अगर Q का sign negative होगा, इसका मतलब है heat is given by the system. इस केस में heat is given by the system. इस केस में heat जो है ना वो system देता है to the surroundings. यानी heat is given by the system to the surroundings. That means when heat is given by the system to the surroundings, यानी heat flows from the system towards the surroundings. At that time Q has negative sign. उस वक्त Q का negative sign है. If Q is positive, अगर Q का positive sign है, इसका मतलब है heat is absorbed by the system from the surroundings. यानी surroundings में से heat जाती है सिस्टम की तरफ, यानी सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स. उस केस में होगा Q का वैल्यू होगा पॉजिटिव. उस केस में Q का वैल्यू होता है पॉजिटिव. अब ये जो ये Q है, जो ये हीट है, इसका यूनिट क्या है? यूनिट्स क्या है इस हीट के? Q का यूनिट ऑफ Q इज यूजुअली मेजर्ड, जो है ना ये हीट, इसको हम यूजुअली करते हैं measured in calories. ये कैलोरीज में हम मेजर करते हैं. सो कैलोरी इज ए क्वांटिटी ऑफ हीट. अगर हम हमारे पास कैलोरी, ये क्या मतलब है? कैलोरी इज ए क्वांटिटी ऑफ हीट. ये क्वांटिटी ऑफ हीट है, यानी क्वांटिटी ऑफ हीट required. And how can we define calorie? Calorie is a quantity of heat required to raise the temperature of
raise the temperature of 1 gram of water, 1 gram of water through 1 degree Celsius, 1 degree Celsius in the vicinity of 15 degree Celsius, in the vicinity of 15 degree Celsius. यानी एक कैलोरी होती है उतनी क्वांटिटी ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस. अगर हमारे पास 1 ग्राम वाटर है, उसका अगर हम टेम्परेचर रेज करेंगे बाय 1 डिग्री सेल्सियस, रेज करेंगे टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड फॉर दैट पर्पस, दैट इज नोन एज 1 कैलोरी. उसको बोलते हैं ये 1 कैलोरी है. सो यहां पर हम मानते हैं 1 कैलोरी होता है. सो यहां पर एक्चुअली ऐसा यूनिट जो होता है हीट का, दैट इज जूल, वो जूल है. ऐसा यूनिट होता है जूल. 1 कैलोरी होता है 4.184 जूल. इसके बराबर ये इसका कन्वर्जन फैक्टर है. सो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, या 1 जूल होता है 0.239 दिस कैलोरी. 1 कैलोरी होता है 4.184 जूल, या 1 जूल होता है 0.239 कैलोरी. जो ये हीट है, सो जो हीट है, हीट इज एक्चुअली a path function, is a path function. ये path function है, like work. जिस तरह work path function है, इसी तरह ये भी path function है. What that means? It means that it does not depend upon the state of the system. And if you change the state of the system, its value will not change. It only depends upon the path. That means it depends upon the path by which that state has been reached. And it does not depend upon the state of the system. It only depends upon the path by which that state has been reached. So heat, like work, is a path function. It is not a state function. So this was about very important form of energy, which is represented by Q. This important form of energy is known as heat. इसको हम बोलते हैं heat. Okay.